M1 moves up and M2 moves down. अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा So you have one person A of mass 10 kg. This is moving up with acceleration of 2 meters per second square. You have another person attached to the same rope and it's moving down. With a velocity of say 2 meters per second. You have to find the tension at this point. इसकी free body equation लिखो because this is moving down. So we can say T2 is equals to first के लिए T1 minus T2 minus M1G is equals to M1A. Tension in a low part of fixed support. 20. इसका आंसर 120 दिया है. It should be 200. Next is third question. 4 spheres of diameter 2a and mass m are placed with the centers on the 4 corners of a square of side B. Moment of inertia of system about an axis passing along one of the sides of a square.
Four spheres of diameter 2a, so radius a, are placed with the corners on a square of side b. हमें ये given है, ये side b है. Okay, radius a है. You have to find moment of inertia along one side of a square. Moment of inertia about diameter is 2 by 5 ma square. तो बेसिकली इन दोनों का फर्स्ट एंड सेकेंड का सेम होगा. Total moment of inertia is twice the moment of inertia of first plus twice the moment of inertia of fourth. This should be 8 by 5 ma square plus 2 mb square. So moment of inertia about one side. From a circular ring of mass m and radius r, an arc corresponding to 90 degrees removed. Moment of inertia of remaining part about an axis passing through a ring and perpendicular is k times mr square, the value of k is. So formula तो change नहीं होता, but mass 3/4 रह जाएगा. तो moment of inertia will be 3 by 4 mr square. Normally अगर मेरे पास complete ring हो, if its mass is m, radius is r, moment of inertia is mr square. Now if you have 1/4 ring removed, इसका mass हो जाएगा 3 by 4 m. Moment of inertia का formula it's still same. So implies k is equals to 3 by 4. Next. The angular momentum of a particle describing circular motion is L. If kinetic energy is halved and angular velocity is doubled. So kinetic energy is halved, angular velocity is doubled. So you can find the relation. You have angular momentum is L is equals to I omega. Kinetic energy of rotation is half I omega square. L square by 2a. हमें दिया kinetic energy is halved and angular velocity is doubled. So L को you can also write it as this is K.
ये रिलेशन आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एल में. सो अगर हम ले रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर दिया तो हाउ एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, तो कैसे रिलेशन बनेगा? L can also be written as L can also be written as मैं L को ऐसे लिख सकता हूँ 2k by omega. कि नहीं लिख सकते ताकि ओमेगा आ जाए हमारे पास रिलेशन में, बिकॉज L स्क्वायर इज 2ki. हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है ना, इसको अगर आप ऐसे लिखो यू आर गेटिंग दिस. तो इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ. I को लिख दिया L by omega, so you can say it's 2k by omega. अब हमें दिया है कि एंगुलर वेलोसिटी डबल कर दी, काइनेटिक एनर्जी हाफ कर दी, तो इट विल बी 1/4. L dash is kinetic energy is halved and angular velocity is doubled. So L dash is L by 4. Three identical rods, each of length x, are joined to form a rigid equilateral triangle, radius of gyration about an axis passing through corner and perpendicular to triangle. Equilateral triangle of side x. Moment of inertia about an axis passing through one corner. Say first rod. First or third का moment of inertia about 8 ml square by 3. इसका center यहाँ पे. ये distance x या x by 2. This would be. ये distance कितना होगा? Root 3 by 2x. Root 3 by 2x. That is h. So moment of inertia system का निकालेंगे. That is I1 plus I3 plus I2. I1 is I3 is ml square by 3. I2 is mh square. H is root 3 by 2l. लेंथ को मैं l ले रहा हूँ x की जगह. So this is 2 ml square by 3 plus this is mk square. K is root 3 by 2l. C part आ जाएगा. K is root 3 by 2l. सर इसका ए पार्ट दिया होगा. हाँ जी, इसका आंसर ए पार्ट 12.
हमने कोई मैथ्स में गड़बड़ तो नहीं की? सर वहाँ पे √5 x/2 नहीं आना चाहिए, जहाँ पे आपने √3 x/2 लिखा है h को। हाइपोटेन्यूज है ना, तो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, तो 3/4 एक्स स्क्वायर। लेंथ तो ठीक है हमारी। मैथ्स में एक बार चेक कर देते हैं। बिकॉज x/√3 जो है दैट इज सेंट्रोइड का डिस्टेंस है वो तो। ठीक है ये मैथ। यही आएगा आंसर। √3/2 x ही आ रहा है। A solid sphere of radius r has moment of inertia I about its geometrical axis. It is melted, so mass should remain same. It is melted and into a disk of radius small r and thickness t. If moment of inertia about tangential axis of a disk is I is also equals to I, then the value of r is. हमें दिया जो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स टेंजेंट इज सेम। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये क्यों नहीं हुआ? आई हमें सेम दिया है, मास भी सेम है, तो सिर्फ रिलेशन ही निकालना था स्मॉल आर और कैपिटल आर में। हमें स्मॉल आर की वैल्यू बतानी है कितनी हो जाएगी। ये कैंसल, (2/√15r). The curve between log of angular momentum and log of linear momentum is. हमारे पास दोनों में रिलेशन है तो सिंपल ही है। तो you know that. At any instant you can say it. Log L is equals to log R plus log P. So straight line not passing through region, because intercept भी आ रहा है. So straight line not passing through region. So B part आएगा.
thin circular ring of mass m radius r rotating about its axis with angular velocity omega. Two objects of mass capital M are attached to the two corners. Conservation of angular momentum लगा दो. ये तो free वाले questions हैं जो doubt में आए हैं. Circular ring है, moment of inertia is mr square omega. Angular momentum. Finally, it's mr square. So omega dash is omega m over m plus 2m. Three bricks, each of length L and mass m, are arranged as shown from the wall. Distance of center of mass of the system from the wall. Distance of center of mass of the system from the wall. सबका center of mass निकाल लो किस distance पे lie कर रहा है. सबका center of mass कहाँ lie कर रहा है. First का L/2 पे, second L/2 पे, L पे और third 5L/4 पे. Because इसका center of mass lie कर रहा है इधर. इसके center पे. इसका center of mass यहाँ पे. और इसका center of mass इधर. जिससे x coordinate x1 is L/2. Coordinates of center of mass are so 11/12L. Next is about an axis perpendicular. तो simply ml square by 12 formula है तो moment of inertia of rod about its center. It does not depend upon shape. Bend है या नहीं है.
So it will be same ml square by 12. Proof करना आप कर सकते हो. Half का mass m by 2, length l by 2, ये भी m by 2, length l by 2. So we can say moment of inertia is twice of because about corner it's ml square by 3. But otherwise, it's a general concept that moment of inertia does not depend if the rod is bent or not, because distribution of mass remains same. This distribution of mass about axis of rotation remains unchanged. This is for center only, not about one end. Because अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता से मेरे पास ऐसे रॉड है which is so this is axis of rotation. मेरे पास ऐसे एक रॉड है. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास m लेंथ l. ml square by 4 bracket 1 plus sin square theta. क्या फॉर्मूला बताया? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एक्सिस. सर किसके अबाउट निकालना है? एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस एक ही बनाया ना जिसके साथ एंगल थीटा बन रहा है रॉड. प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट. प्लेन के परपेंडिकुलर कहां? इन द प्लेन बनाया मैंने. ओके. ml square by 3 sin square theta. ml स्क्वायर बाय 3 sin स्क्वायर थीटा. ठीक है. बिकॉज अगर थीटा 0 हो जाएगा तो इट विल बी 0. अगर थीटा 90 हो जाएगा तो ml स्क्वायर बाय 3. सो ml स्क्वायर बाय 3 sin स्क्वायर थीटा. हो गया सबका सॉल्व? Yes, sir. बिकॉज आप यार डिस्टेंस ले लोगे. इसको अगर मैं लेता हूँ उससे y, ये थीटा, तो दिस विल बी x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे छोटा सा मास लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज dm into x square. dm is lambda dy into
ml square by 3 sin square theta. So moment of inertia bend करने से change करता है about axis passing through one end, but not about axis passing through center. Because इसमें distribution of mass vary कर रही है, center के about नहीं करती. A particle is projected with a velocity of 200 meter per second at an angle of 60 degree. At highest point, it explodes into 3 particles of equal masses. One goes vertically up with 100, second goes vertically down with same velocity. Then what is the velocity of third? Conservation of linear momentum लगाओ. हमें दिया at highest point at an angle of 60 degree. The momentum at highest point is mu cos 60. Final momentum. Because 2 का तो कैंसिल हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट दिया. And horizontal. Because एक ऊपर गया था with the velocity 100, second down with velocity 100, तो वो तो momentum cancel हो जाएगा. Initial momentum is equal to momentum of third part. A T-shaped object with dimensions as shown. हमें लेंथ दिया ऊपर AB की L और vertical length is 2L. A force F is applied parallel to AB such that object has only translational motion without rotation. Find the location of P. हम कहाँ पे force लगाएं so that it does not rotate? Point where force can be applied so that there is translational motion and no rotational motion. A center of mass. The center of mass पे लगाएंगे तो torque acting will be 0. तो center of mass निकालना है सिर्फ कहाँ पे है. सर इसमें masses देने चाहिए थे मेरे को लगा. Masses नहीं देते ना, because uniform distribution दी होती है, जब नहीं दिया होता तो AB का mass m और vertical length का 2m. Because वो rod का material change नहीं करते ना, तो because length दे दी है L और 2L तो masses m और 2m. Second right concept लिख लो इसका. If the body is not rotating, it implies that torque acting about center of mass is 0. It implies that torque acting about center of mass is 0, or torque acting about center of mass is 0, or the force is applied at the center of mass. Force is applied at the center of mass. तो आप किसी एक पॉइंट को रीजन मान के सॉल्व कर सकते थे. मैं इसको अगर वो रीजन मान लूं, y coordinate of center of mass is 2m into L. So ये distance 4L/3 होना चाहिए.
So with respect to C, distance should be 4L by 3. Three identical blocks A, B, C and placed on horizontal frictionless surface. Block A and C are at rest, but A is B and C rest पे होना चाहिए because A तो movement show की हुई है diagram में, so block B and C होना चाहिए rest पे. फिर हमें दिया है but A is approaching towards B with a speed of 10 meter per second. Coefficient of restitution for all collision is 0.5. The speed of block C just after the collision. So पहले A B से collide करेगा फिर B C से, तो हमें C की velocity बतानी है after the collision. Coefficient of restitution का फॉर्मूला लगा दो पहले. E is equal to VB minus VA over UA minus UB. पहले VB निकालो कितना आएगा. और फिर B और C की collision होगी तो VC कितना आएगा. फिर इसको सॉल्व दो बारी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाना है और मोमेंटम कंजर्वेशन लगानी है. हमें लगाना है कंसेप्ट. With VC as so पहले A और B की collision फिर B और C की collision. A cylinder rolls up in inclined plane, reaches some height and then rolls down without slipping. So pure rolling. A direction of frictional force on the cylinder are. थ्योरी का क्वेश्चन आ गया है तो सिलेंडर रोल करके पहले ऊपर जा रहा है फिर रुका और फिर वापस आ गया. You have to find the direction of frictional force. चूज करना ऑप्शंस में से. आपको सिंपल कंसेप्ट लगाना है. जब ऊपर जा रहा है रोल करके तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, जब नीचे आ रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है. So, दोनों केसेस में फ्रिक्शन अपवर्ड ही आएगी. बिकॉज अगर वो ऊपर जा रहा है
The second case is जब वो नीचे आ रहा है. इसमें omega is decreasing, इसमें omega is increasing. So frictional force acts in upward direction in both the cases. Two particles of mass m1 and m2 in projectile motion have velocity v1 and v2 at time t is equals to 0. They collide at t is equals to t naught. Velocity becomes v1 dash and v2 dash after time 2t naught. While still moving in air, the value of change in momentum बताना है कितना होगा. So change in momentum है तो impulse momentum theorem लगेगी. So you have to apply impulse momentum theorem. Force एक कर रही है m1g plus m2g सिस्टम पे और टाइम है 2t naught. तो m1 plus m2 into g into 2t naught. So 2m1 plus m2 into gt naught. A uniform cylinder has radius r and length L. If moment of inertia of cylinder about an axis passing through its center and normal to the circular face is equal to moment of inertia of same cylinder about an axis passing through its center at perpendicular to its length, then moment of inertia. हमें बेसिकली ये दिया है r is equals to L by root 3. So L is equal to root 3r. कुछ डाउट्स मेरे को लेट आए थे वो भी देख लेते हैं. ये सर एल स्क्वायर बाई 12 कहाँ से आया? आप रॉड का ऐड करोगे ना, बिकॉज अगर एक्सेस देखो ना, एक्सेस बदल दिया. mr square by 2 तो होता है बहुत सिमेट्रिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन. दूसरा देखो, नॉर्मल टू द सर्कुलर फेस इज इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम सिलेंडर about an axis passing through center and perpendicular to its length. तो perpendicular axis थ्योरम लगा के दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होगा ना, रॉड का और डिस्क का. यस, ठीक है. रॉड का अबाउट इट्स सेंटर एंड डिस्क का अबाउट डायमीटर. नेक्स्ट इज जो और डाउट थे, क्वेश्चन नंबर
70 हमने किया, अभी 70 किसी का डाउट है, 69 और 70। सर 24 भी था एक। मैं अभी पीछे से देखता हूँ यार, 69 एंड 7, 24 का डायग्राम नहीं है, वो नहीं होगा। आज शोन इन लिखा है, पर मेरे पास भी उसका डायग्राम नहीं है। 69th क्वेश्चन देखो। A set of n identical cubical blocks lies at rest parallel to each other on a smooth horizontal surface. Separation between near surfaces of any two adjacent blocks is L. The block at one end is given speed v towards the next one at time t is equal to 0. All collisions are perfectly inelastic. The last block, वो डायग्राम छोड़ दो, 69 में डायग्राम कोई और दिया है, हमें दिया लास्ट ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग एट, ऑप्शन चूज करनी है। n ब्लॉक्स हैं और एडजेसेंट ब्लॉक्स में d का डिस्टेंस है, तो टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर इज l by v. फाइनली सिर्फ लास्ट ब्लॉक मूव कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है, तो इट्स mv अपॉन nm, बिकॉज फाइनली तो सिर्फ एक ब्लॉक ही मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज mv अपॉन nm, सो v by n. ए पार्ट ठीक है या गलत है? ए पार्ट ए पार्ट देखो ठीक है या गलत है? सर ठीक लग रहा है। Last block starts moving at a time n minus 1 into L by V. Time between two collisions is L by V. And there are n minus 1 collisions. So first part bhi theek hai. The last block starts moving at time t is equal to n minus 1 into L by V. And center of mass moves with velocity v. What constant 470th? What constant force tangential to the equator should be applied so that Earth stops its rotation in one day? Earth की initial angular velocity पता है, final 0 चाहिए, एक दिन का time है, तो अल्फा निकाल लो और tau is equals to I अल्फा। ये तो easy था क्वेश्चन, कैलकुलेशन थी सिर्फ 70th में। तो also इसको सॉल्व कर लो। I 2/5 mr square और नीचे भी आ रहा है,
ये सॉल्व करना था आपको. Force required to stop the earth in 1 day. Then we have question number 65. Sixty-five में दिया meter stick is held vertically with one end on the floor and is then allowed to fall. If the end touching the rod is not allowed to slip, the other end will hit the ground with a velocity. Conservation of energy. पहले rod vertical है, then it falls. mgl by 2 is equals to rod का moment of inertia about one end. So root 3gl. Speed with which other hand will hit the ground. फिफ्टी कर लिया हमने. 50 किया था. अभी 50 और 20 दो डाउट्स और हैं. $50. A binary star consists of two stars, A of mass 2.2 times mass of Sun and B of mass 11 times the mass of Sun. They are separated by a distance d, are rotating about the common center of mass, which is stationary. The ratio of total angular momentum of the binary star to the angular momentum of B about center of mass. तो बाइनरी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम होता है रिड्यूस्ड मास के टर्म में, और जब बी का निकालना है तो सिर्फ बी का एंगुलर मोमेंटम लेना है. तो अगर मैं उसको टू बॉडी सिस्टम मानूं, टू बॉडी सिस्टम अगर हम मानते हैं तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा जब सिस्टम का निकालेंगे. सिस्टम का, और फिर फाइनली सिर्फ एक मास का निकालना. हमें मास दिया एक का मास दिया है 2.2 ms, एक का 11 ms, मतलब एक m एक 5m. एक को मैं अगर m लेता हूँ तो दूसरे का मास 5 टाइम्स ज्यादा दिया है, m और 5m. You have to find second का total cause, second की रेशो. तो अगर मैं पहले सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा, हमें पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम और एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या नहीं लिख सकता. ओमेगा सेम ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, सोच के बोलना. सर ओमेगा सेम ले सकते हैं. ओमेगा सेम ले सकते हैं. ओमेगा सेम ले सकते हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ऐसे. यस सर. मास में और RARB में कोई रिलेशन है? मास में और RARB में
This is MARA square. हमारे पास एक और रिलेशन होता है, because सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, तो MARA is equals to MBRB. तो अगर मैं MBRB को MARA पुट कर दूं, क्या आएगा यहाँ पे? ये कैंसिल हो गया, RA by RB plus 1. RA by RB can be written as एक तो ये मेथड, क्या आप इसको ऐसे कर सकते थे? सेकेंड मेथड क्या रहेगा? इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या होगा अगर मेरे को ऐसे नहीं करना, रिड्यूस्ड मास से करना? रिड्यूस्ड मास से करना है तो कैसे करेंगे? सिस्टम का क्या लिखूं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम. यहां से आएगा आंसर? अब वैल्यूज पुट करो ना. ऐसे भी कर सकते थे. Then you have question number. और कौन सा डाउट रह गया? किसी का 20 था, किसी का शायद डाउट 20 तो कर दिया. और कोई डाउट है तो बताओ इसमें.
हमें दिया thin massless thread is wound on a reel of mass 3 kg and moment of inertia 0.6 kg per meter square. The hub radius is r is equals to 10 centimeter and peripheral radius is 20 centimeter. The reel is placed on a rough table and friction is enough to prevent slipping. Find acceleration of center of reel and hanging mass of 1 kg. करो इसको solve. Find acceleration of center of reel and hanging mass. Thread massless है, reel का mass 3 kg है, moment of inertia given है और block का mass 1 kg है. इसको solve करो. For reel. इसका मास मैं ले लेता हूँ, इनमें इसका m बाद में सब्स्टिट्यूट कर दूँ. टॉर्क इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा आर की वैल्यू हमें दी है इट्स 10 सेंटीमीटर. Alpha is equals to mass m2. m2 का मास दिया 1. अच्छा, अब आया मेन पॉइंट. A1 और A2 में क्या रिलेशन है? A1 और A2 में A2 is A1 by 2. तो हमारे पास ये 5 इक्वेशंस आ गई. A1 A2 बताना है कितना.
करो सॉल्व इसके आगे। फाइंड a1 and a2। 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और a1 0.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a1 0.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरे को अभी शुरू में बताया कि असाइनमेंट आपने +1 में भी यही की थी, तो फिर तो इतने डाउट्स होने नहीं चाहिए थे वैसे, और भेजे भी मेरे को सिर्फ 3 लोगों ने, अब बाकी किसी के डाउट्स आए नहीं। अब मेरे को पता नहीं कैसे तैयारी कर रहे हो अपनी, की डाउट्स भी नहीं आ रहे आपके। प्रैक्टिस के लिए मैं इसके 60-70 क्वेश्चन और सेंड कर दूंगा, पर उसके डाउट्स इंडिविजुअली मेरे को भेज देना, क्लास नहीं लग पाएगी उसकी, और बिकॉज ग्रेविटेशन भी करना है हमने, और फिर उसके बाद टर्म +2 का शुरू करना। बट डाउट सबके आने चाहिए, जो भी आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो। 3 लोगों के डाउट्स आएंगे तो अगली बारी से वो 3 लोग ही क्लास में आएंगे। जिसके डाउट्स नहीं आएंगे क्लास से पहले, उसको क्लास में भी नहीं आने दूंगा, ऐसे नहीं है। और मेरे को लग रहा है कुछ लोग ऐसे ही डाउट्स भेज रहे हैं बिना अच्छे से सॉल्व किए। सो मेरे को फिर अगर डाउट्स है तो फिर मैं हो सकता है आपसे सोल्यूशन भी मांगूं कि आपने क्या ट्राई किया, तो ऐसे बिना किए मेरे को डाउट्स के नंबर लिख के मत भेजना। तो जो आपके डाउट्स होंगे मेरे को उसके सोल्यूशन भी चाहिए होंगे कि आपने कहाँ ट्राई किया। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे, और इसको थोड़ा सा सीरियसली पढ़ो। इस ट्यूसडे भी अभी मैं वैसे रोटेशन के एडवांस के क्वेश्चन कराऊंगा। जो ट्यूसडे की एडवांस वाली क्लास है उसमें रोटेशन के ही क्वेश्चन करेंगे। अभी रोटेशन में टाइम लगेगा, ग्रेविटेशन में क्योंकि एडवांस में चाहिए नहीं, तो रोटेशन के ही कंटिन्यू करेंगे ट्यूसडे को भी।